Communications of Brazil, and Sri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry of India. We now have the MOU for cooperation in MSME, entrepreneurship and crafts. This document will be exchanged by Mr. Marcio Luis Franca Gomez, Minister of State for Entrepreneurship and Micro and Small Enterprises, and Sri Pavitra Margarita, Minister of State for External Affairs of India. Next, we have the MOU between Brazilian Health Regulatory Agency, Anvisa, and the Central Drugs Standard Control Organization of India. This document will be exchanged between Mr. Leandro Safatle, Director President of Anvisa, and Shri Dinesh Bhatia, Ambassador of India to Brazil. Lastly, we have the following two documents: the MOU on e-certificates of origin under the India-Mercosur Preferential Trade Agreement, and the MOU between INPI and CSIR on Traditional Knowledge Digital Library. These two documents will be exchanged between Mr. Marcio Elias Rosa, Deputy Minister of Development, Industry, Commerce and Services of Brazil, and Shri P. Kumaran, Secretary East in the Ministry of External Affairs of India. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I would like to inform that Prime Minister Modi will be addressing the media in Hindi. Members of the audience may use the audio device provided to listen to the translation in Portuguese language. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon. Your Excellency, Mr. Luis Inácio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, राष्ट्रपति लूला, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथी, नमस्कार, बोआ तारदे। राष्ट्रपति लूला और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जिस आत्मीयता और गर्मजोशी के साथ आपने पिछले वर्ष ब्राजील में मेरा स्वागत किया था, आज उसी भाव के साथ भारत का मैं आपका अभिनंदन करता हूं और ये मेरे लिए विशेष संतोष का विषय है। भारत और ब्राजील के संबंधों को राष्ट्रपति लूला की दूरदृष्टि और प्रेरक नेतृत्व का लंबे समय से लाभ मिलता रहा है। बीते कुछ वर्षों में मुझे इनसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला है और हर मुलाकात के दौरान मैंने भारत के प्रति इनकी गहरी मित्रता और विश्वास को महसूस किया है। राष्ट्रपति लूला के इस दौर ने ऐतिहासिक AI इम्पैक्ट समिट की शोभा भी बढ़ाई और हमारी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा भी दी है। मैं उनकी मित्रता
और दोनों देशों के संबंधों के प्रति कमिटमेंट के लिए राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारी जो चर्चाएं हुई हैं उनमें हमने हर क्षेत्र में शेयर्ड पर्पस और शेयर्ड एस्पिरेशन से आगे बढ़ने पर विचार विमर्श किया है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। राष्ट्रपति जी के साथ आया बड़ा बिजनेस डेलीगेशन इसी विश्वास को दिखाता है। भारत मर्कोसुर ट्रेड समझौते के विस्तार से हमारा आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारा सहयोग दोनों देशों के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्व रखता है। मुझे खुशी है कि हम ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को भी हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हम दोनों देश मानते हैं कि टेक्नोलॉजी मस्ट बी इंक्लूसिव एंड इट मस्ट बिकम अ ब्रिज फॉर शेयर्ड प्रोग्रेस। ऊर्जा सहयोग हमारे संबंधों का एक मजबूत स्तंभ रहा है। हाइड्रोकार्बन के साथ साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ऐसे अनेक क्षेत्रों में भी सहयोग को और अधिक गति दे रहे हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में ब्राजील की सक्रिय भागीदारी ग्रीन फ्यूचर के प्रति हमारे साझा संकल्प को दर्शाती है। ब्राजील ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की सह-अध्यक्षता का भी प्रस्ताव रखा है। मैं इस पहल के लिए राष्ट्रपति लूला का अभिनंदन करता हूं। इस क्षेत्र में ब्राजील का व्यापक अनुभव सीडीआरआई को और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ में जो समझौता हुआ है वो रिजिलिएंट सप्लाई चेन्स के निर्माण में एक बहुत बड़ा कदम है। डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। ये एक दूसरे के प्रति भरोसे और रणनीतिक तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। हम इस विन विन पार्टनरशिप को आगे भी और मजबूत करते रहेंगे। हम कृषि और पशुपालन क्षेत्र में अपने साझेदारी को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से नए आयाम दे रहे हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट इन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग और बायो फर्टिलाइजर जैसे क्षेत्रों में हमारा सहयोग दोनों देशों की फूड सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। ब्राजील में ऑयल सीड्स, पल्सीज और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसी दिशा में एक अहम पहल होने वाली है। हेल्थ और फार्मा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। हम भारत से ब्राजील को एफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन की आपूर्ति बढ़ाने पर काम करेंगे। साथ ही ब्राजील में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी विस्तार किया जाएगा ताकि
होलिस्टिक हेल्थ केयर को बढ़ावा मिले। फ्रेंड, वैश्विक मंच पर भारत और ब्राजील की साझेदारी सशक्त और प्रभावशाली रही है। लोकतांत्रिक देशों के रूप में हम ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। When India and Brazil work together, the voice of global south becomes stronger and more confident. हमारा मानना है कि हर समस्या का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत और ब्राजील एक मत है कि आतंकवाद और उसके समर्थक पूरी मानवता के शत्रु हैं। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि वर्तमान समय की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थानों का रिफॉर्म अत्यंत आवश्यक है। हम इस दिशा में भी मिलकर प्रयास करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी यह यात्रा हमारी रणनीतिक साझेदारी को और गहराई देगी और आने वाले वर्षों में सहयोग के नए आयाम स्थापित करेगी। मैं एक बार फिर आपकी यात्रा और आपकी गहरी मित्रता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ओब्रिगादो। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Luis Inácio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil, to give his remarks to the media. Excelentíssimo senhor Primeiro-Ministro da República da Índia, Narendra Modi, amigos ministros da Índia, amigos e amigas ministros e ministras do Brasil, meu caro amigo. And my dear friend Modi, it is a reason of happiness for me to return to this country for the 6th time. The meeting between India and Brazil is a meeting of superlatives. We are not just the two biggest democracies of the global south. This is a meeting of the world's pharmacy with the world's barn, and a digital superpower with a renewable energy superpower. We are both mega diverse countries and hubs of of the cultural industry, and we both defend multilateralism and peace. The invitation by Prime Minister Modi for this state visit and also to attend the AI Impact Summit shows the synchrony and mutual trust that binds us together. A few months ago, in July last year, I had the honor of hosting my friend Modi in Brasilia. His visit was a milestone. On that occasion, we restructured the bilateral cooperation agenda in 5 areas: defense and security, food and nutritional security, energy transition and climate change, digital transformation and emerging technologies, and industrial partnerships in strategic areas. Today, in Delhi, in the year when we celebrate 20 years of the establishment of the Brazil-India Strategic Partnership, we are going into action. Therefore, the preparation of this visit involved the visit of my Vice President, Geraldo Alckmin, and a business delegation last year. Also involved the early arrival of many ministers and 300 business people this week. We signed several agreements that provide concrete quality to our cooperation in these areas. It is notable
the Indian evolution in cutting-edge sectors such as information technology, artificial intelligence, biotechnology, and space exploration. They create a lot of cooperation opportunities with Brazil. And this translates our commitment with an agenda that places technology at the service of inclusive development, increasing investment and cooperation in matters of renewable energies and critical minerals is at the core of the pioneering agreement that we have signed today. At the level of the Global Biofuel Alliance, our countries are securing the due place for this technology in the climate agenda and global energy agenda. The establishing of synergies between the industrial hubs of health for our countries is also a central part of the bilateral cooperation. India and Brazil work side by side and have done so for decades in defending equal access to medication, above all generic medication, and also for health sovereignty at the World Health Organization. In this visit, Fiocruz has signed several agreements for research and local production of strategic inputs such as vaccine for tuberculosis and oncologic medications, immunosuppressors, and for neglected and rare diseases. There is also a great potential for cooperation in the area of smart hospitals, such as the hospital that Minister Padilla visited in Bangalore 2 days ago. In the area of defense, our aeronautic industry has been strengthening its presence in India, as it can be seen by the opening of the Embraer office in Delhi. The trilateral agreement between Mazagon Dock and the Indian and Brazilian navies is going to be part of the maintenance activities for submarines of the Scorpion class and other military vessels. All of these efforts will help for us to reach the target that Prime Minister Modi and I agreed on last year of increasing our trade flow to $20 billion by 2030. In 2025, bilateral flow surpassed $15 billion for the first time in history, a growth of 25% in relation to 2024. We are moving forward so fast that we should revisit our goal of reaching 30 billion in exchange by 2025. And then depending on the Brazilian business delegation that actually came to India, we are going to continue with this bilateral relationship. The agreement to increase the validity of tourism and business visas to 5 to 10 years is an initial step to facilitate and increase the flow of people between our countries. In the same way, the Brazil-India Economic Forum will gather about 600 representatives from the private sectors from both countries, looking for the many business opportunities. As a reply to the trade unilateralism, Mercosur, as well as India, recently concluded a free trade agreement with the European Union. Therefore, it is more than natural that Mercosur and India work so as to increase significantly the preferential trade agreement which we already have in force amongst us. My friends, a turbulent global scenario requires our countries to strengthen and deepen our strategic dialogue. I hosted the presidency of the G20 in Prime Minister Modi in 2024. I've received the presidency from him, and this year India received from Brazil the presidency of BRICS. This presidency flow between our countries is extremely beneficial to the interests of the global South. India and Brazil are crucial voices at the UN
at the WTO and G20. We are partners in building a multilateral governance which is more just, peaceful, governed by international law. Prime Minister Modi and I talked at length about how we can persevere the paths to peace. There is no possibility of having a fair, sustainable development in a conflicted world. As stated by Prime Minister Modi at the BRICS summit in Rio de Janeiro, it is impossible for us to run a 21st century software in old typewriters from the 20th century. We emphasize our commitment with the UN reform, particularly of the Security Council, so that it may represent the interests from Global South and that have Brazil and India as natural candidates. Here it is important to remind the Indian and Brazilian press that for over 20 years, Brazil, India, Japan, and Germany set up a group called G4, where we defend the increase of the UN Security Council, which is something that hasn't happened until now, but will definitely happen soon, because the UN needs more representation. The UN needs to have the force, the strength to interfere in the conflicts that we see throughout the world today. And if it is, a body that doesn't operate, this will not survive. So we're going to continue to fight for the UN to be more representative with more countries throughout the world and more, Brazil and India as members of the Permanent Security Council. Increasing the categories of permanent and non-permanent members is an essential condition to provide legitimacy and efficacy to global governance amidst so many challenges. We support the efforts for the end of the war in the Ukraine. It is also urgent, important to alleviate the suffering of the Palestinian people. Brazil has really repudiated the attacks in Kashmir. We know that terrorism is not associated to any religion or nationality. Also, it cannot be confused as public security challenges that many countries face. These are different phenomena, and that should not be used as an excuse for intervention at the margin of international law. I reaffirm to Prime Minister Modi that Brazil is committed to maintaining, keeping South America as a zone of peace. After all, the only wars that humanity should engage in is the wars against hunger, poverty, and environmental degradation. This state visit provides a new chapter for a long journey of bilateral cooperation between Brazil and India. My dear friend Modi, I would like to finish by saying to you, sir, that I am completely sure that the eyes of Brazil towards India is one of very hopeful eyes. In India, we have a country of a lot of similarities. Despite the difference in the number of inhabitants, we have very similar problems. Our scientific and technological knowledge, they are close. And if we work together, we are going to strengthen Brazil-India bilateral relation. We're going to strengthen our relation with the Mercosur, and we're going to strengthen the Global South so that we never, ever again are faced with a Cold War between, two big superpowers. Thank you very much. With that, ladies and gentlemen, we conclude this press statement. Thank you very much for your presence. Muito bem. Daqui, ó. Não jogue fora. तो भारत और ब्राजील के बीच संयुक्त प्रेस वक्तव्य आपने सुना। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने जानकारी दी किस तरीके से कई अहम समझौते ডার্ক স্পটস ওটা স্ক্রিনে আছে ম্যাডি ফেসে শুধু ন্যাচারাল গ্লো আনস্পট করুন নিজের ন্যাচারাল গ্লো হিমালয়া টার্মারিক ফেস ওয়াশ দিয়ে এতে আছে অর্গানিক্যালি সোর্সড টার্মারিক এনরিচড উইথ নাইসিনামাইড এন্ড গ্লাইকোলিক অ্যাসিড ক্লিনিক্যালি টেস্টেড এটি ডার্ক স্পটস দূর করে ন্যাচারাল গ্লো ফিরিয়ে আনে আনস্পট করুন নিজের ন্যাচারাল গ্লো হিমালয়া টার্মারিক ফেস ওয়াশ Skip nahi
सपने स्किप नहीं, सिप करो। सिंपली विजिट kotakmf.com/MrSIP और सीखो SIP के साथ कैसे हो सकते हैं आपके सपने पूरे सिस्टमैटिकली। और आप? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। छोटा बड़ा बहुत बड़ा, अरे उससे भी बड़ा बहुत बड़ा टाइल, स्मूथ रफ एंड एकदम टफ टाइल। हमारे पास आ गया एक ऐसा नल जो देगा आपको शुद्ध जल। हमारे पास है एक ऐसा पाइप जो बदल देगा आपकी लाइफ। टाइल्स ले लो, टाइल्स ले लो। बाजार में सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आज के प्राइस वॉर में जीत उन्हीं की होगी जिनका ब्रांड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ब्रांड बनेगा तभी तो धंधा बढ़ेगा। सुमाटो ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग